Assalamualaikum students, in the name of who are the most beneficent and the most merciful. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahu al-Azim. Students, my name is Umair Jahangir. Welcome to Jahangir Maths Academy. Today we will start our second lesson of mathematics class 9. In our first lesson we talked about what is the matrix. In this lesson we will talk about what is the order of a matrix and what are the equal matrices. So let's start it. Firstly, what is the order of a matrix? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? The order of a matrix is the number of rows by the number of columns. स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है. तो नाउ आई विल राइट इट इन द फॉर्मूला फॉर्म. ऑर्डर इज इक्वल टू NO dot means number of rows by number of columns. This is our formula. Order is equal to number of rows by number of columns. Now we will take some examples related to the order of a matrix. Examples. Our first example is A 1 2 4 9. स्टूडेंट्स अब हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स की, देन नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इस मैट्रिक्स को देखते ही क्लियर हो गया है कि इसमें 2 रोज हैं और 1 एंड और 2 और 2 कॉलम्स हैं C1 and C2. So our order of matrix according to this formula is 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. So order of n is 2 by 2. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं. सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखी हैं, ये 2 रोज थी. देन हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे हैं 2, ये 2 कॉलम्स थे. गॉट इट. नाउ we will take last 2 examples of the order of a matrix. Our second example is this 9 5 3 and 2. So the order of B is 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. We can say B is a matrix of order 2 by 2. Our next example is this 4. So the order of n is 1 by 1 because it has only one row and
only one column. We can say n is a matrix of order 1 by 1. Now we will take last example. So the order of n is 2 by 3 because it has 2 rows and 3 columns. Got it, students? 2 by 3. We can say I mean the matrix of order 2 by 3. I think you have got it. Now we will talk about what are the equal matrices. Let's erase it. Okay, students. What are equal matrices? Equal matrices क्या हैं? Students, जब इक्वल की बात होती है तो इसका मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा चीजों की एक्सप्लेनेशन होगी और मैट्रिसेस मींस दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस जो एक दूसरे के इक्वल होंगे. इक्वल मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं. अगर 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो फिर ही हमारे मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होंगे. सो over conditions of matrices first condition is order of the matrices must be same. जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वो स्टूडेंट्स सेम होना चाहिए. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम. स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन है हमारे इक्वल मैट्रिसेस की और इसको आपने बोलना नहीं. जो गिवन मैट्रिसेस होंगे ठीक है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. इट्स आवर फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड कंडीशन इज corresponding entries must be similar. स्टूडेंट्स corresponding entries सिमिलर होनी चाहिए मतलब सेम होनी चाहिए. corresponding means बिल तरतीब. अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इक्वल मैट्रिसेस को क्लियर करूंगा अब तक. सो our example is this. A is equal to 2, 9, 4, 7. Next matrix is Z. So Z is 2, 3, 1, 0, and our matrix U is 2, 9, 4, 7. स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन इन
तीनों मैट्रिसेस में क्या वो होल्ड कर रही है कि नहीं। और फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 by 2. We can write the order here. Its order is 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. And the same order 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. Same order 2 by 2 because it has 2 rows and 2 columns. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो इसमें होल्ड कर रही है इन सभी मैट्रिसेस में, तो ये होल्ड कर रही है। अब हमने सेकंड कंडीशन देखनी है। सेकंड कंडीशन भी अगर होल्ड करेगी इन मैट्रिसेस में तो हमारे लिए जो है वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। corresponding entries must be similar. corresponding entries similar होनी चाहिए। corresponding means बिलतरतीब। जैसा कि इसकी अगर मैट्रिक्स है कि ये एंट्री 2 है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी इसी पोजीशन पे जो एंट्री है वो 2 होनी चाहिए। तो देखते हैं, ये भी 2 है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दिस इज 9 एंड दिस इज 3। You know 9 is not equal to 3. That's why A and Z are not equal matrices. ये equal matrices नहीं है। स्टूडेंट्स अब A और U मैट्रिक्स को अब देखते हैं, उनकी corresponding entries क्या सिमिलर हैं कि नहीं। This is 2, this is 2, this is 9, this is also 9. Next 4, it's also 4. Finally 7, it's also 7. You can see the corresponding entries of the matrix A and the matrix U are equal. और इससे पहले जो थी हमारी कंडीशन वो भी होल्ड कर गई थी, इनके ऑर्डर्स सेम थे, तो दोनों कंडीशंस हमारी इनमें फुलफिल हैं। That's why you can say A and U are the equal matrices. So we can write A is equal to U because matrix A and the matrix U are equal matrices. Students, इनमें दोनों कंडीशंस होल्ड कर गई हैं, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन होल्ड कर दे और एक ना करे फिर मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। तो आई थिंक आपने सेकंड लेक्चर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा और इसको शेयर भी करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट। दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।